Hello students, today we start our second chapter of 8th standard. Our chapter name is What is Around Us. As you know that we are going to live on our existence planet of Earth because only Earth have some sustaining and necessities of products which are water, temperature and gases. Other planets of solar doesn't have this type of the necessities. We have family and same solar also have their family which are known as solar family, and our earth is also member of that solar family. So if there is a question that what is the characteristic of earth, so characteristic of earth is that only earth having some suitable temperature, water and gases, and because of this our organisms, vegetation and humanism going to be sustain their life. But how this earth came into existence and we can exist on this earth? So it is believed that Earth is a part of sun and during collision it is detached from the sun. ऐसा माना जाता है कि अर्थ जो है वो सन का ही एक हिस्सा था, लेकिन जो कॉलिशन के समय मीन्स कि जब वो एक दूसरे से टकराए मीन्स ड्यूरिंग कॉलिशन अर्थ जो है वो सन से अलग हुआ, डिटेच हुआ, एंड ड्यूरिंग इट्स ओरिजिनल इट इज इन अ फायरबॉल. जब ये उससे अलग हुआ तो वो फायरबॉल के ओरिजिन में था. When passage of time, this fireball cooled down, there were formed some of the layer. लेकिन जब ये fireball वो ठंडा हुआ तब वहाँ पे कुछ forms create हुए, in which place where is a form of liquid is known as hydrosphere. जो form liquid में कन्वर्ट हुआ उसको हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जाने गए. एंड देन द फॉर्म्स विच कन्वर्ट इनटू सॉलिड एंड रॉक्स इज नोन एज लिथोस्फीयर. जो फॉर्म सॉलिड रॉक से कन्वर्ट हुआ वो लिथोस्फीयर के नाम से जाना गया. एंड देन द फॉर्म विच मेड ऑफ गैसेस इज नोन एज एटमोस्फियर. और जो अलग अलग गैसेस एंड एलिमेंट से जो फॉर्म क्रिएट हुआ उसको हम एटमोस्फियर के नाम से जाने गए. देन द फोर्थ वन इज बायोस्फीयर, वेयर ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स एंड वेजिटेशन यूज these three layers to sustain their life, which is known as biosphere. Biosphere means कि जो ह्यूमन से ऑर्गेनिज्म से जो अपनी लाइफ को जिंदा रखने के लिए या फिर आगे ले जाने के लिए जो तीनों लेयर का जो यूज करते हैं, मीन्स कि वाटर, गैसेस एंड टू लिव ऑन विच इज लैंड, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दिस लेयर इज नोन एज बायोस्फीयर. और तीनों लेयर का जो कॉम्बिनेशन था वो बायोस्फीयर के नाम से जाना गया. एंड दिस इज द प्रोसेस दैट हाउ आवर अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस. आफ्टर दिस नाउ वी स्टडी अबाउट द फर्स्ट लेयर विच इज अ लिथोस्फीयर. जो पहला लेयर है वो की है लिथोस्फीयर. सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन डीपली. सो इन फर्स्ट स्फीयर वी now study about lithosphere. So first of all there is a definition of lithosphere, that what is lithosphere. So lithosphere means a layer where we can live our life. The sphere on which we live is known as the lithosphere. ऐसा sphere जहाँ पर हम रहते हैं. Then what is litho and what is sphere? So litho means rocks and sphere means layer. So there are some of the points which are very important in this lithosphere, in which upper layer. The upper layer of the lithosphere is very strong, and normally this is made of rock materials and also soil. लिथोस्फीयर का जो अपर लेयर है वो सॉइल या फिर रॉक मटेरियल से, इट मीन्स कि हार्ड मटेरियल से बना हुआ होता है. देन द थिकनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नियरली 64 to 100 किलोमीटर.
लिथोस्फीयर का जो सरफेस का जो लेयर है, जो अपर लेयर है, वो 6 to 4 से 100 किलोमीटर जितनी जो थिकनेस है वो ओपनिंग करता है। देन द सरफेस ऑफ द अर्थ नियरली कवर्ड विथ 29%। अर्थ का जो 100% हिस्सा है उसमें से 29% जितना जो हिस्सा है वो लिथोस्फीयर कवर करता है। नॉट सेम एवरीवेयर मीन्स द थिकनेस ऑफ द अर्थ means which is nearly 64 to 100 किलोमीटर are not same everywhere, मतलब कि ये जो थिकनेस है वो हर जगह सेम नहीं होती। एंड ऑल्सो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द फिजिकल फीचर्स ऑन इंटीरियर लेयर और एक्सटीरियर लेयर। इसके जो इंटीरियर और एक्सटीरियर जो फीचर्स है उसको भी हम आइडेंटिफिकेट नहीं कर सकते। नाउ देयर आर सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ लैंड, मीन्स कि लैंड है तो उसके कितने टाइप्स है या फिर उसके सोर्सेज कितने हैं। सो देयर वेर सोर्सेज लाइक माउंटेन्स, प्लेटियर्स, देन वैलीज, प्लेन्स एक्सेट्रा। जो वैलीज है, प्लेन्स है या फिर माउंटेन्स है, प्लेटियर्स है, ये जो लैंड है उसके अलग अलग फॉर्म्स है वेयर वी कैन सस्टेन अवर लाइफ। टेम्परेचर व्हेन वी मूव ऑन at the center of the earth, the temperature increases and sometimes we can also found out magma। जब हम अर्थ के सेंट्रल लेयर तक, सेंटर पे हम मूव करते जाते तो जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है और कभी कभी हम मैग्मा को भी देखने को मिलता है। तो व्हाट इज मैग्मा? सो मैग्मा इज अ फॉर्म ऑफ मोल्टन रॉक्स। एक तरह का जो रॉक्स है उसका एक मोल्टन फॉर्म है। Now there is a question that why the crust of the earth does not break। ये जो अपर लेयर जो क्रस्ट है, जो अर्थ का जो अपर लेयर है वो कौन से रीजंस की वजह से क्रस्ट नहीं होता, एंड अगर ये क्रस्ट अगर टूट जाएगा तो क्या होगा। So the gases present in the interior layer rise up with the pressure and heat। अर्थ के इंटीरियर लेयर पे जो भी गैसेस है वो प्रेशर और हीट के साथ ऊपर आने की कोशिश करते हैं। बट द प्रेशर एंड हीट आर ऑल्सो सेम एट द सरफेस लेयर, इट मीन्स इक्वली स्ट्रॉन्ग। लेकिन सरफेस का जो प्रेशर और हीट है वो इक्वली स्ट्रॉन्ग होता है। सो द बैलेंस बिटवीन टू मीन्स कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर आर सेम एंड बिकॉज ऑफ दिस द क्रस्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट ब्रेक। और जिसकी वजह से इंटीरियर लेयर एंड एक्सटीरियर लेयर का जो बैलेंस है वो मेंटेन हो जाता है और जिसकी वजह से जो क्रस्ट है वो ब्रेक नहीं होता। बट इफ द बैलेंस बिटवीन टू आर नॉट सेम द क्रस्ट ऑफ द अर्थ ब्रेक एंड द वोल्केनो इरप्ट्स। लेकिन अगर ये जो लेयर है वो अगर मेंटेन नहीं हो पाता तो ये जो वोल्केनो है वो इरप्ट होता है एंड जिसकी वजह से क्रस्ट भी टूट जाता है। सो आफ्टर स्टडी अबाउट लिथोस्फीयर, नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द लिथोस्फीयर। सो विच आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द लिथोस्फीयर? सो इन विच फर्स्ट वन वी कैन लिव आवर लाइफ ऑन दिस लेयर। हम अपनी जो लाइफ है वो इस लेयर के ऊपर सस्टेन कर सकते। देन सेकंड वन, वी कैन स्टोर अ वाटर टू ड्रिंक। पानी तो है लेकिन उसको स्टोर करने के लिए हमें लिथोस्फीयर की ज़रूरत है। देन फॉर फूड जनरेशन के लिए लिथोस्फीयर ज़रूरी है। लिथोस्फीयर इज यूज्ड टू बिल्ड हाउसेज एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हाउसेज और इंडस्ट्रियलिस्ट बिल्ड करने के लिए लिथोस्फीयर काफ़ी ज़रूरी है। देन लिथोस्फीयर आर ऑल्सो यूज टू गेट मिनरल्स ऑब्टेन करने के लिए लिथोस्फीयर काफ़ी ज़रूरी है। एंड लिथोस्फीयर ऑल्सो यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉर कल्टिवेशन प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर के लिए भी लिथोस्फीयर काफ़ी ज़रूरी है। सो इन लिथोस्फीयर we study out these main points. Now we are moving on hydrosphere, but first we solve some of the questions related to the lithosphere.
So these are the questions which are only related with the lithosphere, in which the first question is what is lithosphere? Lithosphere यानी क्या? Lithosphere means a layer where we can live. लिथोस्फीयर मीन्स कि ऐसा लेयर जहाँ पर हम रह सकते हैं. देन व्हाट मीन्स लिथो एंड व्हाट मीन्स लेयर? लिथो यानी क्या एंड लेयर यानी क्या? सो लिथो मीन्स रॉक, मीन्स सॉलिड मटेरियल. देन लेयर मीन्स स्फीयर. स्फीयर मीन्स जो लेयर है वो. देन व्हाट एरिया कवर्ड बाय लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर कितना एरिया कवर करता है? सो लिथोस्फीयर कवर्ड 29% area of the लिथोस्फीयर 29% जितना एरिया कवर करता है. देन थिकनेस ऑफ द सरफेस. लिथोस्फीयर में जो सरफेस है उसकी थिकनेस कितनी है? सो 64 to 100 किलोमीटर. तो वो 64 to 100 किलोमीटर जितना जो सरफेस है वो थिक होता है. बट दिस थिकनेस आर नॉट सेम एवरीवेयर. फॉर्म ऑफ लैंड. लैंड के कुछ फॉर्म्स, कुछ सोर्सेस या फिर टाइप्स. सो देयर वेर फॉर्म ऑफ लैंड्स लाइक माउंटेन, प्लेन्स जो बड़े मैदान है, प्लेटियस विच आर द small form of mountain, valleys, etc. Then what is magma? Magma यानी क्या? So magma is a form of molten rocks. Form of molten rocks which is known as magma. Then our last second question is why the crust of the earth does not break. So, as we study that gas is present in the interior layer rise up with pressure and heat. Main point, pressure and heat, but the pressure and heat are also equal at the surface of the earth. So because of this, the balance between two maintain and the crust of the earth does not break. और जिसकी वजह से जो crust है वो नहीं टूटता. And then the last one is the importance of the lithosphere. lithosphere के कुछ important points. In which first one we can live
on this layer. Then second one, we can generate food. Then we can build houses and industries and many others. We can get minerals from interior layer, and then fifth one is agriculture. Possible because of this layer. Agriculture or cultivation production possible है because of lithosphere. So these are the 5 importance of the lithosphere, and also a 7th question related with lithosphere. Now we are moving on the second layer of the earth, which is hydrosphere. We had already studied about lithosphere. Now we study about hydrosphere. So first we start from the definition that what is hydrosphere. So hydrosphere which is liquid component of the earth. Hydrosphere जो कि अर्थ का एक liquid component है. Then we had see that in lithosphere there were some of the form and sources. lithosphere में हमने देखा था कि उसके कुछ sources हैं, जैसे कि प्लेन्स है, माउंटेन है, रिवर्स है, एक्सेट्रा. वैसे ही हाइड्रोस्फीयर के भी कुछ ऐसे फॉर्म है, मीन्स की सोर्सेस है, जैसे कि लेक, रिवर्स, सी, ओशियंस, पॉन्ड्स इटीसी. ये एक वाटर के कुछ सोर्सेस है. नाउ देन the area which covered by hydrosphere is more than lithosphere. हाइड्रोस्फीयर का जो एरिया है वो लिथोस्फीयर से कहीं ज्यादा है. हाइड्रोस्फीयर कवर 71% एरिया ऑफ द अर्थ, जो कि अर्थ का 71% जितना एरिया कवर करता है. इन विच द मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडीज आर कंटेन इन ओशियंस, जिसमें ये जो 71% जितना पानी है उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा ओशियन कंटेन करता है. हमने देखा कि वो हाइड्रोस्फीयर के कुछ फॉर्म्स है, ओशन है, लेक्स है, रिवर्स है. तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो पानी है, मीन्स की वाटर बॉडीज, वाटर जहाँ पे लॉक है वो है ओशियन. तो ओशियन सबसे ज़्यादा एरिया पानी का कवर करता है, अर्थ का नहीं. पानी का हिस्सा ओशियन सबसे ज़्यादा कवर करता है. देन व्हाट इज ओशियंस? ओशन मीन्स अ फॉर्म विच covered a most of the part of the water bodies. जो water bodies का सबसे ज़्यादा पार्ट कवर करता है उसको हम बोलते हैं oceans. So in India there are 4 main oceans, in which first one is Pacific Ocean, second one is Indian Ocean, then third one Atlantic Ocean, and fourth one is Arctic Ocean. ओशन हमने देखा कि लैंड फॉर्म में वैलीज है. वैलीज मीन्स की जो डीपनेस कवर करती है. सेम वैलीज ओशन में भी होती है और जिसकी डीपनेस होती है 10 to 100 किलोमीटर. देन ओशियन कंटेन्स, हमने देखा था कि जो अर्थ है उसमें कुछ लेयर्स है जिसमें 29% लिथोस्फीयर करता है. देन 71% जो हिस्सा है वो हाइड्रोस्फीयर कवर करता है. 29% में उसके कुछ फॉर्म्स थे जैसे कि माउंटेन, प्लेन्स एक्सेट्रा. तो जो 71% हाइड्रोस्फीयर कवर करता है उसमें भी कुछ सोर्सेज है, ओशियंस,
रिवर्स, लेक, सी, पॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो ये जो सोर्सेज है उसमें से 97% जितना पानी है वो ओशियन में कवर्ड है। 70% जो टोटल जो वाटर है मीन्स की एटमॉस्फेयर, वो टोटल पानी में से 97% ओशन है। याद रखना 70% वो अर्थ का एरिया है। 70% अलग ले लेने के बाद जो हमारे पास वाटर पानी है वो 100% है, जिसमें से 97% पानी ओशन में है विच आर नॉट ड्रिंकेबल, जो पीने लायक नहीं है। 97 बाकी का जो 3% है जिसमें से 1.4% जितना जो पानी है वो आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में मीन्स की जो हिमालयाज है जहाँ पे जो बर्फ है, जो बर्फ के फॉर्म में जो पानी लॉक है वो है 1.4%। उसके अलावा कुछ पानी जो रिवर्स में है, पॉन्ड्स में है, लेक्स में कवर है। फिर कुछ ऐसा पानी है जो अंडरग्राउंड है, जमीन के नीचे है। इट मीन्स द ड्रिंकेबल एंड पोर्टेबल वाटर इज वेरी लेस, और जिसकी वजह से जो पीने लायक पानी है वो काफ़ी कम है। इट मीन्स द वाटर इज वेरी प्रीशियस एंड द फ्रेश वाटर इज रिक्वायर्ड बाय लिविंग बीइंग्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस, और हमारे एग्जिस्टेंस के लिए फ्रेश वाटर काफ़ी ज़रूरी है। द मॉइस्चर फॉर रेन विच इज द मेन सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर comes from the oceans only। रेन के लिए जो हमें मॉइस्चर चाहिए मीन्स की जो वेपर चाहिए क्लाउड्स के लिए, वो हमें मोस्टली कहाँ से, तो ओशियंस में से मिलती है। तो ओशियंस काफ़ी ज़रूरी है, सिर्फ मॉइस्चर के लिए नहीं, लेकिन ओशियंस में से बहुत सारी प्रीशियस चीज़ें भी हमें मिलती है। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी स्टडी करने के बाद अभी हम उसके कुछ इम्पोर्टेंस देखेंगे, दैट हाउ द हाइड्रोस्फीयर इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ। तो पहली चीज़ है कि हाइड्रोस्फीयर, जिसमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा हिस्सा ओशन में होता है। तो ओशन में से हमें क्या मिलता है, तो मिनरल्स मिलते हैं हमें, फिर केमिकल्स, सॉल्ट, फिशेस, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ओशियन में से मिलती है। एज वी हैव लिविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन द अर्थ, सेम लिविंग ऑर्गेनाइजेशन आर प्रीफर इन ऑल्सो ओशियंस एंड दैट, जैसे मतलब लिविंग ऑर्गेनाइजेशन अर्थ के ऊपर है वैसे ही सेम लिविंग ऑर्गेनाइजेशन पानी के अंदर भी होती है, विच इज नोन एज एक्वाटिक लाइफ। देन द ट्रिमेंडियस वेव्स एंड टाइड्स, जो वेव्स एंड टाइड्स है विच हैव अ पोर्टेबल फोर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में ओशियंस के जो वेव्स है वो काफ़ी यूजफुल है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में ओशन काफ़ी यूजफुल है। एंड बिसाइड दिस द ओशंस आर ऑल्सो यूजफुल एज वाटरवेज। ये जितने भी इम्पोर्टेंस है उसके अलावा वाटरवेज के तरह भी हम ओशियंस को काफ़ी यूजफुल कर सकते हैं। After then, this is used for organisms, living component of aquatic life। एक्वाटिक लाइफ के जिंदा रहने के लिए ओशियंस या फिर वाटर बॉडीज काफ़ी ज़रूरी है। एंड the most important water bodies are useful for drink water, पानी पीने के लिए means existence of our life। water bodies are very useful which is very less। So same is now we are
also completed and moving on question related with the hydrosphere. अभी हम हाइड्रोस्फीयर के भी कुछ मेन ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे. To learn out these points, there were a easy and smoothly administration to learn out the short notes of lithosphere and hydrosphere. अगर आप कुछ मतलब ये जो पॉइंट्स अगर आप लर्न आउट कर लोगे तो इजी रहता है कि लिथोस्फीयर या फिर हाइड्रोस्फीयर के बारे में लिखना या फिर जानना. सो लेट्स मूव ऑन. So these are the questions, means the main points of the hydrosphere. If you conclude these main points, it is easily to remember about hydrosphere. In which definition, so what is the meaning of hydrosphere? Hydrosphere means liquid component of the earth. अर्थ का जो लिक्विड कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर. देन एरिया, हाइड्रोस्फीयर का एरिया कितना कवर करता है तो 71%, विच इज मोर देन लिथोस्फीयर. देन सोर्सेज, उसके सोर्सेज क्या है तो पॉन्ड्स, लेक्स, ओशियंस, रिवर्स एक्सेट्रा, ये उसके सोर्सेज है. देन ओशियंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओशियन एंड कितने ओशियंस इंडिया में है तो ओशियन मीन्स विच कवर्ड मोस्ट ऑफ द वाटर बॉडीज. जो वाटर बॉडी का एक ह्यूज एरिया कवर करता है उसको हम बोलते हैं ओशियंस. ओशन है इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, Atlantic Ocean, and fourth one Arctic Ocean. These are the main oceans of India. Then depth of the valley, ocean की जो वैली है उसकी डेप्थ कितनी है so 10 to 11 किलोमीटर डेप्थ. Then main area covered in water, याद रखना हाइड्रोस्फीयर अर्थ का पूछे, अर्थ का कितना एरिया कवर करता है तो 71%. लेकिन ये 71% जो पानी है मीन्स की जो वाटर बॉडीज है उसमें ओशन कितना एरिया कवर करता है या फिर मोस्ट ऑफ द एरिया कहाँ पर कवर है तो ओशन में कितना तो 97%. 97%. सोर्स ऑफ रेन, रेन का मेन सोर्स क्या है ओशियंस, क्योंकि उसका जो मॉइस्चर है वो हमें ओशियन से ज़्यादा मिलता है. देन इम्पोर्टेंस, उसके इम्पोर्टेंस क्या है तो हमने देखा था कि हमें मिनरल्स मिलते हैं, वैल्यूएबल केमिकल्स मिलते हैं, सॉल्ट मिलती है, फिश, ये सब कुछ हमें ओशियन में से मिलता है. देन सस्टेन ऑफ एक्वाटिक लाइफ, एक्वाटिक लाइफ वहाँ पर सस्टेन हो सकती है. उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो टाइड्स है, वेव्स है, जिसमें से जिसका फोर्स और पोर्टेबल फोर्स यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. देन ऑल्सो गेट वाटर फ्लो, ड्रिंकिंग, उसके वाटर बॉडीज में से हमें ड्रिंकिंग वाटर मिलता है. यूज एज वाटर वेज, एक वेज की तरह वो यूज होता है, ट्रांसपोर्ट की तरह उसको हम यूज कर सकते हैं. सो दिस इज द मेन कंक्लूडेड पॉइंट्स ऑफ द हाइड्रोस्फीयर. नाउ इन अ नेक्स्ट वीडियो वी स्टडी अबाउट the third layer means atmosphere and also about biosphere and how the human activities affect to these 4 layers की human की जो activities है वो इस 4 layers को कैसे इफेक्ट करती है, that it is affected in positive or in a negative manner.